Morning, the time to sing. So, Sister Deba will be singing a couple of songs. After that, um, Pastor Karen will be sharing the 15 minutes of testimony here. Praise the Lord. Sister Deba, you are welcome to sing the couple of songs right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. I give thanks to Almighty God who has given this wonderful day in our life. I really thanks to Him for His mercy endures forever. And secondly, I give thanks to Pastor Jolie who has given me chance to worship in this ministry. And I greet you all in the mighty name of Jesus Christ. And I believe and I pray those who are going to watch this video online, they will surely bless with the Holy Spirit. Hallelujah. We will sing together and we will worship to our living God. We will sing one first song, God Sent His Son. Really, He sent His Son that He came to us to leave us, heal us, and forgive our sin. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the clamor sure, this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. And then one day I crossed Death River. I fight life war with pain. And then as death gives way to victory, I see the lights of glory and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds my future. And life is worth the living just because He lives. God sent His Son. They called Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior reigns. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know He holds the future.
future. And life is worth the living just because we live. Lord, I lift your name on high, lift your name on high. Lord, I love to sing your praises, love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high, lift your name on high. Lord, I love to sing your praises, love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है there is power power wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है. Hallelujah. Thank you, Jesus. We will sing last song, Lord, the light of your love is shining. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know, bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nation with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light.
Lord, I come to your awesome presence from the shadows into your radiance. By the blood I may enter your brightness. Search me, try me, consume all my darkness. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. As we gaze on your kingly brightness, so our faces display your likeness, ever changing from glory to glory. Mirror here, our lives tell your story. Shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your word, Lord, and let there be light. Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you know, bring us. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Blaze, Spirit, blaze. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your love, Lord, and let there be light. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Such a wonderful, powerful song. God bless you, Sister Deepa. Praise the Lord. Hallelujah. Now, this is a time to share the testimony. Pastor Jay Singh from India will be share the testimony in the 15 minutes time to the world. Praise the Lord. Hallelujah. Pastor is the pastor at the church in Lucknow. Praise the Lord. God bless you, Pastor Jay Singh, to the Shake the Nations UK. Is inviting you to share your testimony at the 15 minutes time. God bless you. Thank you. First of all, I would like to thank God for this opportunity, and thank you, Pastor Jolly, for inviting me to share my testimony. As the word of God, if you read, then Jesus always preferred testimonies on behalf of worship and sermons. So my testimony is like this. On 3rd of August 2020, when this pandemic is moving all over the nations, this COVID-19, and especially in India, the cases were very high, and the cases crossed above 1 lakh people. So in the midst of this pandemic, I never thought that I have to face this brutal condition, uh, because as a pastor, I used to preach in the houses or in the church from the book of Psalms, chapter number 91, where God is promising to his people and a prayer of protection, the promises of protection. And I was proclaiming these
the promises of protection to my people and to my congregation. But suddenly, on 3rd of August, uh, my father getting ill, and he was breathless in exactly 3rd of August. So don't know that what happened to him. Then suddenly we took him to the hospital uh, for a checkup, and when the doctor came and he has seen his SpO2 level, his oxygen level. At that time, he was breathing around 40, which is nearly close to the condition where doctors put the patient on the ventilator. So 40 SpO2 level. Then what happened? Then immediately we took him to the bigger hospital for the treatment, for the checkup. And before that, we were not confirmed that he was COVID positive. None of the hospitals they are ready to take my father, because this is a rule here in India or in everywhere, that first they need to check the patient whether he is COVID positive or not. Then only they take the patient. Then only they will admit the patient. So on the 4th of August, we admitted him to the hospital, and the situation was very brutal because he's the head of our family, and as being a son, we will all are tensed. Me and my mother, my wife, and my father to us also, because doctor suggested us to get and go on a check this COVID-19. It might be possible that we are also being infected by this virus. But the grace of God, this is the biggest testimony, that even my father, he was suffering with him the whole night, the whole day, before he was getting the symptoms. But by the grace of God, none of us get COVID positive. Hallelujah. But usually, if you see in the case of COVID-19, the people, those who get close to the patient, they also get infected. But in this case, me and my family, none of them, none of them were infected from this virus. Only my father. And when he get admitted in the hospital, I used to get the daily information, daily details regarding to my father by the doctors. They used to call me up in the morning and just give me the daily routine report, that how is my father right now. So his condition was not well in the hospital, and it's hard for a person if he suffers these kind of a problem in a practical way. So, by the grace of God, on 23rd of January, after fighting all these days, since from 3rd August until 23 August, 23rd August, my father get discharged from the hospital, and some of my father friend, one or two my father friend, they've got died from this virus. But we have prayed for him the day and night, especially on the knees. I kept my father, that please, I've asked God that please do something so that I may witness to the people that you are still working in our midst, you are still alive. And that's what the God did. And on 23rd of August, after fighting from this coronavirus, my father came back from the hospital, and after coming back, he went through the this thing, um, you can say isolation. And then after completing 15 days of isolation, he met us, and we were all happy that after fighting from this coronavirus, where where we see all around the world, the people are getting destroyed. So most of the people, most of my friends, my colleagues, and they have got died from this virus, and most of the family, they were in pain and agony. But I will thank my father, my God, that he protect us. He did not promise in his word that we will not face the problems, but he promised us that in the midst of the problems, when we go through the wilderness, he will going to be with us, like he was with the Israelites. So I am very thankful
and to God that He protect my father as well as He protected my family. So this is the very crucial testimony for me this in the past this year 2020, that we are still have been found living in this world. Thank you. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Thank you very much. Thank you for the testimony here, because our God is a helper. Praise the Lord. Our God will help us. Psalms 91. Pastor, you said the Psalms 91. This is a protection which our God has already granted. Praise the Lord, in the Bible. So that when you are walking by faith, what the world people that doesn't know the things. But when you are walking by faith, the things, all the promises which our God has given, written in the Bible, it will fulfill in our life. Praise the Lord. This is what is going to happen. Thank you very much. God bless you, Pastor Jai Singh. Thank you for your testimony. God bless you. So we can pray for the pastor. Everybody, please raise your hand. You can pray for the pastor right now. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, I pray for Pastor Jai Singh right now. Father, keep them in your glory, Father. Give more protection. Give more anointing, Father, power, Father. Not only his life, but in the spiritual level, Father. In Jesus' name, I pray. Somebody want to shout and say amen. Amen. God bless you. Now this is today I want to talk John chapter 6 onwards. Like every day, I was talking the last week, the different chapters. We already finished Acts of the Apostles. Now I would like to preach another 32, nearly 40 minutes time. Praise the Lord, maximum. The John chapter 6. Praise the Lord. आज हम बात So करेंगे today we can आज हम बात करेंगे यूहन्ना की इंजील से, यूहन्ना की पत्री से। पिछले दिनों में हमने प्रेरितों के काम की पत्री को खत्म किया है और आज हम यूहन्ना के चैप्टर 6 अध्याय 6 से बात करेंगे। When you're reading Acts of the Apostle chapter 6, at the initial stage, you know that when Jesus Christ was multiplying and feeding, giving the food to the 5,000 people from 5 loaves and 2 fish, Jesus Christ was giving the enough food to the 5,000 people, 5,000 men. जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हम वचन में क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5,000 लोगों को खिलाया। After that, when you are reading the following verses, we can see. After that, verse 24 is when the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples. They also got into the boat and came to the Capernaum seeking Jesus. The people, those who had seen the miracle, those who could eat the food, praise the Lord. Again, this all the people, all the multitude, they were following Jesus Christ. यहाँ पर देखते हैं हम यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना की पत्री, उसका 6वें अध्याय की 24 आयत में क्या लिखा है। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। जो लोग परमेश्वर के चमत्कारों को देख रहे थे, वो परमेश्वर की भाल करने के लिए उसके पीछे पीछे कफरनहूम में चले गए। The will of Jesus Christ was not staying one place permanently. Jesus Christ was traveling from one city to other city and preaching the kingdom of God. यीशु मसीह कभी भी एक स्थान पर नहीं रहकर प्रचार करते थे, वो अलग अलग शहरों में जाकर प्रचार को करते थे, अपने परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बताते थे।
This is the same thing. That's what Jesus Christ did the miracle in one place. After that, Jesus Christ went to other city to preach the gospel. इसी कारण यीशु मसीह एक जगह पर चमत्कार को करके अगले शहर में जाकर प्रचार करते थे. Bible says, verses 25 says, John chapter 6, verses 25, Bible says, and when they found that the people found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you came here? When did you come here? इसी प्रकार जब हम यूहन्ना की पत्री में से 6वें अध्याय की 25 आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, झील के पार जब वह उससे मिले तो कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया. उन्होंने यीशु मसीह को पूछा कि हे रबी तू यहाँ पर कब आया. Then Bible says, verse 26 says, then Jesus Christ answered and said, most assuredly I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. यहाँ पर आगे आयत में देखते हैं 26 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो. In this world, the most of the people are, some people want to believe Jesus Christ when Jesus Christ was performing the signs and wonders. When you are receiving any of the healing, most of some people they will come back to the God. इस संसार में क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यीशु मसीह के चमत्कार को देखते हैं. अगर उनकी जिंदगी में यीशु मसीह ने चंगाई को दिया है, कोई चमत्कार दिखाया है, तो इसी कारण वो यीशु मसीह का पीछा करने लग जाते हैं. Some of the people, they are coming to Jesus Christ because of their poverty. That means it doesn't matter what is your situation. Okay, wherever you are calling upon the name of Jesus Christ, God will answer, give you the answer. In the name of Jesus Christ, I want to say to everybody, most of the people, they are seeking Jesus Christ because they got something from God. Because of this reason today, they are coming to Jesus Christ. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके कई कारण हो सकते हैं कि वो यीशु मसीह में आते हैं. इसका कोई मतलब नहीं है कि आप किस हालात में यीशु मसीह के पास आए हैं, लेकिन जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो आपको उत्तर जरूर देता है. That's what. These 5,000 men, that more than 20,000 people, they could eat the food as much they want. After that, 12 basket remaining, the breads and everything, it was left. The reason was when Jesus Christ was doing the miracle, Jesus Christ will do. The nature of God is whatever you need more than that, our God can able to provide in your life. यहाँ पर देखें, केवल 5,000 व्यक्ति नहीं थे, वहां पर 20,000 से ज्यादा व्यक्ति होंगे जिन्हों को परमेश्वर ने खाना खिलाया, और फिर भी खाना खिलाने के बाद भी 12 टोकरे थे जो रोटियों के बच गए. ये हमारे परमेश्वर का स्वभाव है. यीशु मसीह का स्वभाव ये है कि आप जो कुछ उससे मांगते हैं वो उससे ज्यादा बढ़कर आपको देने की सामर्थ्य रखता है, शक्ति रखता है. वो आपको उससे ज्यादा देने की ताकत है उसके पास. Again, John chapter 6, verse 27 says, Jesus Christ was giving the answer to the disciple, praise the Lord, to that people. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because the God, the Father has sent his seed on him. यहाँ पर देखें आगे 27 आयत में क्या लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है. That is what the John the Baptist said. Before Jesus Christ, John the Baptist was introducing Jesus Christ. That means the kingdom of heaven is at hand. Repent and believe in gospel. इसी प्रकार जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो यीशु मसीह के आने से पहले उसका प्रचार करना शुरू कर दिया था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है, पश्चाताप करें. That is what Jesus Christ was fulfilling all the prophets, what they said about Jesus Christ when he was living in this world. इसी प्रकार यीशु मसीह ने हर एक उस भविष्यवाणी को पूरा किया जो परमेश्वर के आने से पहले उसके दासों ने की थी. वो सभी भविष्यवाणी जब परमेश्वर आए तो वो पूरी हुई.
That's what Jesus Christ said. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. That means without signs and wonders, the will of God is everybody should come to the Jesus Christ today. यहाँ पर देखो क्या लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। इसका मतलब है कि आप चिन्ह और चमत्कार को देखकर परमेश्वर के पीछे ना चलें, बल्कि अपने हृदय से उसके पीछे उसको फॉलो करना शुरू करें। The will of the Heavenly Father towards you and me, towards all these 700 crores people, those who are living in this world, the will of the Heavenly Father about you and me, to all the people. That means you have to believe. You should believe that this is a work of the Lord, that you believe in Him whom He sent. Everybody should believe that Jesus Christ is your Lord and Savior. इसी प्रकार मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप और मैं और जो 7,000 करोड़ जितनी भी दुनिया इस संसार में रह रही है, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कारों को देखकर परमेश्वर का पीछा ना करें, बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ यीशु मसीह के पीछे हो लें और उसके ऊपर विश्वास करें। Some people, they were living in the surroundings region. The Jewish people, they were asking to Jesus Christ, you want to show some sign, praise the Lord. You said you came from heaven. The Heavenly Father, and that God is your Father, you told, but you had to show one sign. All the people, they were asking to Jesus Christ. वहां पर जब परमेश्वर इस धरती पर थे, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ यहूदी लोग ऐसे थे जो परमेश्वर से प्रश्न को करते थे कि हमें चिन्ह और चमत्कार दिखा कि तू सच में स्वर्ग से आया है और तेरा पिता है। तूने कहा है कि मेरा स्वर्गीय पिता है, तो हमें दिखा कि कैसा है और हमें प्रकट कर कि तू सच में स्वर्ग से उतर आया है। That's what Jesus Christ said. Verse 32 says, most assuredly I say to you, Moses did not give you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from the heaven. The Heavenly Father was feeding the children of Israel, not by Moses. यहाँ पर देखे 32 आयत में क्या लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि मेरा पिता जो स्वर्ग पर है, उसने इजरायलियों को वहां जंगल में रोटी दी थी, मूसा के द्वारा आप नहीं प्राप्त की, बल्कि ऊपर से स्वर्ग से परमेश्वर ने उस रोटी को भेजा था। All the children of Israel, they could eat the bread, the 40 years as much they want, because Moses didn't give this bread. Our God was saying, Jesus Christ was saying to the people, this bread was given by my Father from the heaven. आप जानते हैं कि 40 साल उस जंगल में वो लोग, इजरायली लोग रहे, और तब तक, जब तक वो यहाँ रहे, तब तक परमेश्वर ने ऊपर से स्वर्ग से उनको मन्ना दिया, रोटी को खिलाया, ना कि मूसा, बल्कि परमेश्वर उनको देता रहा। Today, I want to say to all the people are watching online, right? Whenever you are getting the healing by the prayer, whenever you are receiving the prosperity, whenever you are getting the changes in your life from the death to the life, or whenever you are getting the healing in your body, you are not getting any of the power from any of the church pastor, from anybody. You have got all the healings, everything from by the mighty power of the Holy Spirit. आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर आपने चंगाई को प्राप्त किया है, कुछ भी परमेश्वर से प्राप्त किया है, सफलता को प्राप्त किया है, तो ये नहीं कि वो परमेश्वर के दासों ने आपको चंगाई दी है, सफलता दी है। ये केवल हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है जो आपको चंगाई और आगे बढ़ाता है। That is what Jesus Christ said. I am going to my Father's place. When I am going, I will send my spirit, the spirit of the Heavenly Father. That means my spirit I'll send to you. When I am sending the spirit of the Father, this Holy Spirit will teach you about what I have said in this world and what is going to come in this world in future, what will be happening in the future in your life. Everything the Spirit of God will teach you. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं जाता हूं अपने पिता के पास, लेकिन अपनी आत्मा आप लोगों को भेजूंगा, मैं अपना पवित्र आत्मा आप लोगों को दूंगा, जो आपको हर एक बात सिखाएगा, जो आने वाली भविष्यवाणी, जो आने वाले लोग, जो आने वाली बातें हैं, वो भी पवित्र आत्मा आपको सब कुछ सिखाएगा कि आप क्या करेंगे। Today, each and everything is happening in your life if you are the child of God
by the mighty presence of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. आज जो कुछ भी आपकी जिंदगी में हो रहा है वो यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, जो शक्तिशाली परमेश्वर है। From the Genesis till Revelation, when you are reading the Bible, each and every miracle, each and every signs and wonders, it has happened by the mighty power of the Holy Spirit in the hands of Jesus Christ through the Heavenly Father. आप देखें कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितने भी मिरेकल, जितने भी चमत्कार, जितने भी वंडर्स हुए हैं, वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा है, स्वर्गीय पिता के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा ये सब चमत्कार हुए हैं। That is what Brother Jay Singh already explained, the COVID, the virus and everything. Praise the Lord. Today, the children of God, they could come out from their death to the life because it is not by the support of the the medical the medicines or anything. This is by the mighty power of the Holy Spirit. Because of this reason, today you are still alive in this world. इसीलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपने थोड़े समय पहले ब्रदर जे की गवाही को सुना कि उन्होंने अपने पिता की कैसे गवाही दी कि परमेश्वर ने उनके पिता को बचाया। ये किसी दवाई से नहीं बचे या किसी भी और कारण से नहीं बचे, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उनके पिता को परमेश्वर ने सेव किया और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चंगा करता है। Whoever believes in Jesus Christ, we will get a life abundantly. We will get a long life. This is a word of God. This is a promise of the Lord. ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर का वचन है कि वो आपको जीवते रखेगा और आपको शांति प्रदान करेगा। That's what verse 33 says. For the breath of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. That gives life. That means everlasting life, eternal life, spiritual life, physical life. Whenever we are living in this world, we will get a long life if Jesus Christ is your Lord and Savior. यहाँ पर देखे 33 आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ये परमेश्वर की जो रोटी है वो हमें जीवन देती है, आत्मिक जीवन देती है, शारीरिक जीवन देती है, लंबा जीवन देती है। जो परमेश्वर है वो हमें लंबा जीवन देता है। So when I start my public ministry, I was alone, but I was trusting God. The only one thing, I was trusting God. This God can raise me up one day. This God can help me one day. The same thing happened today. Praise the Lord. I'm rejoicing in front of the world, in front of everybody. So today, lots of people are joining with us right now from different countries, from different cities. The people are joining across the world. The reason is our God is for us. Who can stand against us? हालेलुया। यहाँ पर पास्टर जोली अपने बारे में बताते हैं कि जब मैंने अपनी सेवकाई को स्टार्ट किया, शुरू किया, तब मैं अकेला था, लेकिन मैं जानता था, मैं विश्वास करता था, मैं प्रार्थना करता था कि एक दिन परमेश्वर मुझे जरूर उठाएगा और इस्तेमाल करेगा। और आज मैं बहुत परमेश्वर में खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है और अलग अलग कंट्री से, देशों विदेशों से, नेशन से, सब कुछ ये जहां पर भी है परमेश्वर के द्वारा लोग इनको देख रहे हैं। If you are standing for God, if you are getting any of the difficult situation, if you are facing in your life, our God can come and destroy the situation which is coming against your life, because our God is saying, I am your God Almighty. अगर आप आज किसी भी बुरे हालात से गुजर रहे हैं, किसी भी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो कहता है मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर करूंगा। और अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Our God is saying to the Jacob, I am the God of Bethel. Our God is saying to Abraham, I am the God of Abraham. हमारा परमेश्वर जैकूब को कहता है कि मैं बैथल का परमेश्वर हूँ, अब्राहम को कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। Our God is saying today to everybody, to Pastor Jolie and Sister Deva and Brother Jay Singh, our God is saying, I am your God, I am your God, I am your God, I am the God Almighty. I can do everything in your life. Nothing shall be impossible in front of me. यहाँ पर आज परमेश्वर आपको क्या कहते हैं? ब्रदर जय को, मेरे को, पास्टर को, परमेश्वर हर किसी को जो देख रहा है, जो सुन रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं शक्तिशाली परमेश्वर हूँ और मैं आपके साथ हूँ। Another thing I want to say, if you're standing for God, maybe most 99% the people, those who are loving you, most of the people, they will come and stand against
they will come and stand in front of you. They will say something against you. मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो भी लोग आपके खिलाफ उठ खड़े हो सकते हैं और आपसे नफरत कर सकते हैं. But one thing I want to say to all the people, you should never lose your hope in God. You have to trust in God. You have to walk in God. You have to hold the promise of the Lord in your life. लेकिन आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी अपनी आस को, होप को ना छोड़ें. आप हमेशा परमेश्वर में आगे बढ़ें और उस पर विश्वास रखें. When you are walking with the promise of the Lord, when you are hoping, when you are having hope in God, when you are putting your trust in God, this God can take care of your life. Like Abraham, he was facing a lot of problems in his life, but he was trusting God. He was having deep faith in God. Because of this reason, he could become the apostle of the righteousness of the Lord. आप देखें कि परमेश्वर के वायदों को अपनी जिंदगी में याद रखें, कभी भी किसी आस को ना छोड़ें, उस पर विश्वास को करें. अब्राहम की ओर देखें. जो अब्राहम था उसकी जिंदगी में कितने हालात ऐसे थे कि वो गिर सकता था, लेकिन उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा, भरोसा परमेश्वर पर रखा और वो धर्मी कहलाया गया. If you are the righteousness of the Lord, you will get lots of problems like your world people. But one thing, the difference between the world people and the God's elect one, the difference between the world people and you and me, that means you and me will get the protection. If you are the righteous person, our God can deliver you from all your situations which is coming against your life, because you are sanctified and redeemed by the blood of Jesus Christ. इसी प्रकार मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप और बाकी संसार के लोगों को परमेश्वर ने अलग किया, आपको अलग करके चुना. अगर आप परमेश्वर की धार्मिकता में हैं तो हो सकता है अब्राहम की तरह भी आप मुसीबतों में आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने खून के द्वारा खरीदा, खून के द्वारा साफ किया है और आपके साथ है, और परमेश्वर ने आपको चुनकर संसार के लोगों से अलग करके रखा है. Today, I want to say the people are watching from online. People are watching from your house. Maybe you are thinking, so tomorrow how I will live. You are thinking tomorrow my child or my family members, they are in the point of the death. How I can survive these things? You nothing to worry. The word of God says nothing will happen in your life. I will never leave you nor forsake you. This is a word of God. Whoever believes, who are trusting this word of God, definitely 100% you can come out from the death to the life. आज बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस बात को सोच रहे होंगे कि मैं कल कैसे जीवित रहूंगा, मेरा फैमिली मेंबर या मेरा पारिवारिक सदस्य कोई मौत के किनारे तक पहुंच चुका है, ये कैसे छुटकारा को पाएगा, कैसे चंगाई को पाएगा. लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसके वायदों को याद रखें. सच में परमेश्वर आपको उस हालात से बाहर निकाल कर लेकर आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा. The another thing is, compare the world people and the children of God. The world people, when they are getting die, they will go to hell. But the children of God, we have one hope that we will get eternal life. We will reach in the eternal glory. We can sit in the heavenly places. We can sit in front of the table of Jesus Christ in the heaven. This is our hope in Jesus Christ. इसी प्रकार मैं लोगों के बीच में और परमेश्वर के बच्चों के बीच में फर्क बताना चाहता हूं कि जब आप मरेंगे, जब आप जाएंगे तो परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठेंगे, स्वर्ग को देखेंगे, परमेश्वर के पास जाएंगे. I want to say one thing to all the people. If you want to come out from various kinds of infirmities from your life, which you are suffering today, only one thing you have to do. First, seek his kingdom. Later on, one by one, everything will be adding to your life. आज मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, अगर आप किसी भी हालात से, किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करें, तो ये सब वस्तुएं आपको पीछे पड़कर मिलेंगी. Bible says, first seek his kingdom. Look at the Bible. Do something for God. Don't look at the world people. Put your step, the step which you have put in front of everybody. You have to go ahead like that. Sometimes difficult situation will come, dry situation will come, wilderness will come in your life, but don't look at these things. Bible says, I have overcome the world, because the presence of the Lord always will lead you in your life wherever you are going.
आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सबसे पहले उसके राज की खोज कर, सबसे पहले उसके राज की खोज कर और उसके कामों को कर, परमेश्वर के कामों को करें। ये संसार के लोगों की तरफ मत देखें। हो सकता है आपके हालात सूखे हों, आपके हालात जंगली जीवन के जैसे हों, लेकिन परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपको उठाएगा। Apostle Paul, he was prosecuted the church of God. Praise the Lord. Acts of the Apostles, chapter 5, 6, 7. All the people, all the disciples of Jesus Christ, including Stephen and Philip, and all the disciples, they were so afraid. Praise the Lord. Hallelujah. That means Stephen got died because the hand of Apostle Paul. All the church got scattered. But even though how they were doing the gospel work, they were not worrying anything about the people, those who are disturbing them. They were preaching by the mighty power of the Holy Spirit from city to city, from nation to nations. प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं कि अपोस्टल पौल, प्रेरित पौलुस कैसे पहले जीवन में परमेश्वर के बच्चों को तंग करता था, उन पर अत्याचार करता था, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं स्टीफन और फिलिप और पौलुस को, कैसे इन लोगों ने परमेश्वर का प्रचार किया, बहुत सा परसिक्यूशन इन्होंने अपनी जिंदगी में सहा, अत्याचार को सहा, लेकिन ये कंटिन्यू लगातार परमेश्वर के कामों को करते रहे, कभी भी किसी से डरे नहीं और परमेश्वर के कामों को आगे लेकर जाते रहे। How the Philip and everybody could preach the gospel after the death of Stephen. कैसे फिलिप ने परमेश्वर के प्रचार को किया स्टीफनुस की मौत के बाद? Because mighty presence of the Holy Spirit, because by the Spirit of the God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उन्होंने ये काम किए। That is what the Acts of the Apostles chapter 2, all the disciples, they were getting the mighty presence of the Holy Spirit. प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि यहाँ पर चेलों ने कैसे परमेश्वर की हजूरी को, प्रेजेंस को महसूस किया और उसके द्वारा ही सारे काम किए। Before the Acts chapter 2, you can see Apostle Peter and all the disciples, they were so afraid. They could not preach the gospel in front of the society. But when the moment, when the Spirit of God came to their life, they could preach the gospel boldly to the nations. पवित्र आत्मा को पाने से पहले जो प्रेरित पतरस था और उस चेले थे, वो यीशु मसीह के कामों को करने नहीं पाए, लेकिन जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, परमेश्वर की हजूरी को पाया, तब वो आगे बढ़े और परमेश्वर के कामों को करने पाए। That is what Bible says. When the Spirit of God will come to you, you yourself cannot do anything by your hand, but the Spirit of God will lead you how to do and what to do and everything. Today, each and every people, those who are doing the spiritual work, you will get a boldness to preach the gospel in front of the nations by the mighty power of the Holy Spirit. आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी परमेश्वर के कामों को करते हैं, वो ऐसे ही कामों को नहीं करते, उनके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है। परमेश्वर के आत्मा को वो पाकर, उसकी हजूरी को पाकर, वो बोल्ड से, बहुत ताकत से, बहुत प्रभावशाली रूप से परमेश्वर के कामों को करते हैं। That is what the Bible says. One day, book of Ephesians chapter 2 verse 13 says, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Praise the Lord. We were doing something against the Lord, but through Jesus Christ, by the blood of Jesus Christ, we could able to stand in front of the Heavenly Father by the blood of Jesus Christ. परमेश्वर के लहू के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ को पाकर हम परमेश्वर के कामों को कर सकते हैं। उसकी आत्मा को पाकर ही हम परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के आत्मा को पा लेते हैं, तब हम उसके कामों को करना शुरू कर देते हैं। Book of Ephesians chapter 2 verses 19 says, now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints of the members of the household of God. यहाँ पर देखिए इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय 19 आयत में क्या लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। Again, book of Ephesians chapter 2 verse 20 says, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
हालेलुया। यहाँ पर देखिए इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 20 आयत में क्या लिखा, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो। All the disciples before the death of Jesus Christ, all the disciples, they were not having any of the idea about what was their position. जो सारे परमेश्वर के चेले थे, प्रेरित थे, जो परमेश्वर के साथ थे, उनको नहीं पता था कि उनकी पोजीशन, उनके हालात या उनकी स्थिति कैसे होने वाली है। They were enjoying the miracle which Jesus Christ had done in front of the disciples. वो सब परमेश्वर के कामों को, चमत्कारों को एंजॉय कर रहे थे, आनंद मना रहे थे। जो परमेश्वर उनके सामने कामों को करते थे, तो वो देखकर बहुत खुश होते थे। When Jesus Christ said to the disciples, go and preach the gospel and cast out the devils, Jesus Christ selected 70 disciples and 12 disciples. Jesus Christ sent from city to city and preach the gospel and cast out the devils. They could do accordingly, or they were rejoicing the power which our Jesus Christ has done, which Jesus Christ has handed over to the disciples. When they received that power, they were rejoicing and enjoying. जब 70 चेले और 12 चेलों को जो परमेश्वर ने चुने थे, परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया कि जाओ, जाकर प्रचार करो, जाकर दुष्ट आत्माओं को निकालो। जब वो गए, दो करके जब वो गए सिटी टू सिटी, शहर शहर वो जाते रहे, तब वो परमेश्वर के कामों को करते थे, तो बहुत रिजॉइस, बहुत आनंद होते थे परमेश्वर के कामों को करके, और देखते थे अपने अंदर कि परमेश्वर ने हमें कैसी सामर्थ दी है जो हम ये काम करते हैं। All the disciples could able to do the miracle in the name of Jesus Christ. They could cast out the demons in the name of Jesus Christ, but they were not having any of the idea about what was their position in Christ Jesus. तो सारे जो चेले थे, जो सारे प्रेरित थे, यीशु मसीह के नाम से वो लोगों को चंगा करते थे, लोगों के बीच से दुष्ट आत्माओं को, भूत प्रेतों को निकालते थे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम हमारी पोजीशन इसमें क्या, यीशु मसीह में क्या होने वाली है, लेकिन वो यीशु मसीह के कार्य को करते थे। Today, I want to say to all the people, before you born again, before I born again, we were not having any of the idea about your position, what you are in Christ Jesus. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर में नहीं थे, तब हम नहीं जानते थे कि हम परमेश्वर में क्या होने वाले हैं। But after we born again and baptized, you should come to know you are standing with the greatest position, with the greatest authority from the heaven. लेकिन परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, आपको पता होना चाहिए कि आप किस अधिकार से बुलाए गए हैं और आपके पास कौन से अधिकार हैं। We are the ambassador from the heaven. हम स्वर्गदूत हैं परमेश्वर के। We are sitting in the heavenly places. हम स्वर्गीय स्थानों पर बैठेंगे। We are the apostles and prophets. हम प्रेरित और भविष्यद्वक्ता हैं। We are standing with the greatest authority and power. हम परमेश्वर के पूरे अधिकारों के साथ खड़े होंगे। Bible says, the heavenly book of Ephesians chapter 1 verses 21 says, for above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in that which is come, Jesus Christ is above all this principality and power. यहाँ पर देखिए इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 21 में क्या लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक पर है, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया। Ephesians 1 verse 22 says, and he put all things under his feet, praise all the dominion, all the power, all the principalities, all the powers, all the satanic work, everything is under the feet of Jesus Christ. यहाँ पर देखे 22 आयत में क्या लिखा, और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। जो सब अंधकार की शक्तियां, सब शैतान के काम है, सब जो 2 नंबर की शक्तियां, जो कुछ भी जादू टोने की पावर, शैतान के कार्य, अंधकार की शक्तियां, डेविल शक्तियां, ये सब परमेश्वर के पांवों के तले के नीचे है, परमेश्वर के पांव के नीचे है। If Jesus Christ is having any authority of all these things, that you and me today, what is your authority? In this world, we are standing in place of God. When Pastor George is preaching, Sister Devi is preaching, we are representing God. We are executing the will of God in this world, so that we are standing with the greatest authority. We are standing, our position is above all the principalities and powers, all the darkness of the world. Wherever you are standing, it is like that.
यहाँ पर देखें, परमेश्वर के पास ये अधिकार था, लेकिन हमें भी परमेश्वर ने बहुत सारे अधिकारों को दिया है। हमें परमेश्वर ने ये अधिकार दिए हैं कि हम भी सारी शैतानी शक्तियों को निकालें, सारी शैतानी शक्तियों को डिस्ट्रॉय करें, नाश करें। अगर आज हम प्रचार करते हैं तो परमेश्वर को प्रस्तुत करते हैं, परमेश्वर की मर्जी लोगों तक पहुंचाते हैं, परमेश्वर की मर्जी को प्रकट करते हैं। That's what the Bible says. You can tread upon serpents, scorpions, and all the powers of the enemies. Nothing shall by any means hurt you. Wherever you are going, wherever you are standing with the gospel, maybe the situations are against you, the circumstances are against you. Maybe people will stand something against you. They will say something against you. Bible says nothing will happen in your life. I will be with you till the end of the world. This is a promise of the Lord. आमीन। यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि आपके हालात चाहे कैसे भी हों, आपका आसपास का वातावरण कैसा भी क्यों हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों, लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया कि आप सांप और बिच्छुओं को लताड़ेंगे, परमेश्वर के कामों को आप करेंगे। आपको किसी भी चीज की, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जो आपको हानि पहुंचा सके, क्योंकि परमेश्वर का वायदा आपके साथ है, परमेश्वर के काम आपके पास है, परमेश्वर सब कुछ आपके द्वारा कर रहा है, तो इसीलिए कुछ भी चीज की आपको हानि नहीं होगी। When Apostle Paul was in jail, and Apostle Peter was in jail, praise the Lord, when they were prosecuted, they were not worrying anything about their life. They know that Jesus Christ, the God, the promise giver, can help us, can deliver from the situations. Because when they were prayed to the Lord, our God did accordingly in their life. They could come out from the prison. आप जानते हैं कि जब प्रेरित पतरस जेल में था, प्रेरित पौलुस जब जेल में था, तो वो किसी बात की चिंता नहीं कर रहे थे कि जब वो जेल में थे, लेकिन उनको एक बात का विश्वास था कि हमारा परमेश्वर जो मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमें इस हालात से जरूर बाहर निकालेगा। और परमेश्वर ने वैसा ही किया, जैसे उन्होंने प्रार्थना को किया, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना के अनुसार उनके जीवन में कार्य को किया। The people are watching online. Just I want to say one thing to all the people. Praise the Lord. Nothing to worry anything about your life. If our God is for us, who can stand against you? Praise the Lord. Situations, maybe it will come against your life, but nothing will happen in your life. Every day, if you are in Christ Jesus, you will get a reason to rejoice in front of the world, because Bible says, I am with you till the end of the world. आज जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इसको, तो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आपके हालात चाहे आपके विरुद्ध क्यों ना हो, आप किसी बात की चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर आपसे वायदा करता है, परमेश्वर आपको ये कहता है कि मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, एंड ऑफ द आखिरी साल तक, आखिरी सालों तक, आखिरी दिनों तक मैं आपके साथ, आखिरी युग तक मैं आपके साथ रहूंगा। Bible says only one thing we have to do wherever you are in our life. Philippians chapter 4 verse 6 says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. Again, Bible says, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. This peace of God will lead you. The peace of God will guide you wherever you are. Doesn't matter whenever if you are spending time with God. I want to say one thing to all the people. Your situation will get changed. Nobody can defeat your life. Wherever you are, you will get flourish. Maybe in the desert situation you are facing, you are standing. Doesn't matter. Our God will help you. You can flourish like a rocket. You will get a growth. Praise the Lord. Our God will, when our God is giving his hand, praise the Lord, nobody can prevent your growth. यहाँ पर देखें, फिलिपियन की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी बात की चिंता ना करें, चाहे आपके विरुद्ध आपके हालात क्यों ना हो, आप मेरे परमेश्वर से प्रार्थना करें, निवेदन करें, बेनती करें और परमेश्वर के साथ उसके आगे प्रार्थनाओं को रखें, तो आपको वो हर एक हालात से जरूर छुटकारा देगा, क्योंकि वो आपको बचाएगा। लाइक रॉकेट, जैसे रॉकेट ऊपर को उड़ता है, बहुत ऊंचाई पे उड़ता है, वैसे वो आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इसीलिए आप किसी भी हालात की चिंता ना करें, किसी भी नाश की चिंता ना करें, वो आपके साथ है और अपने वायदों को पूरा करेगा।
Today, if you are doing God's work, praise the Lord, you should not go back your old life. The work which you are doing today, I want to say to all the people, you have to continue. There will be a desert situation, wilderness in your life, but our God is able to break all the chains which is going to come in your life. आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं, काम को करते हैं, वो अपनी ओल्ड लाइफ में, पुरानी लाइफ में वापस ना जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के कामों को कंटिन्यू रखें, लगातार करते जाएं। आपके हालात चाहे जंगली क्यों ना हो, सूखे क्यों ना हो गए हो भूमि जैसे, लेकिन परमेश्वर उसको जरूर अच्छा करेगा, हरा भरा करेगा। लेकिन आप उसके कामों को करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, और वो आपको फलवंत करेगा। Promise of the Lord cannot be changed. Pastor Joel is परमे- saying, according to the Bible, promise of the Lord cannot be changed. पास्टर जोली ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वायदे हैं वो कभी नहीं बदलते। Book of Isaiah chapter 45 verse 2 says, I will go before you. Our God is not saying, I will go after you. Our God is always saying, I will go before you. Wherever you want to go, first of all, our God will be there, standing there, and will call you. That's what, before calling Abraham, our God was saying, Abraham, come out. That means Jesus Christ was standing, the Heavenly Father was standing one place. So that wherever you are going, our God already reached that place, your destination. And after that, our God is calling you, come out, come out. This is what our God is doing. यहाँ पर यशाया की पुस्तक में क्या लिखा है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर हमारे पीछे नहीं, परमेश्वर हमारे आगे चलता है। इसीलिए जब परमेश्वर ने अब्राहम को आवाज लगाई, अब्राहम को बुलाया, तो उसने पहले ही परमेश्वर उस प्लेस में जा चुके थे, उस प्लेस में पहुंच चुके थे। और परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को तैयार करता है, और वो हमारे आगे आगे चलता है और हमें हमारे लिए रास्तों को बनाता है। If our God is saying to go and preach the gospel to the world, that means Jesus Christ had been here in this world. What all the tribulations, what all the situations you want to supposed to face in your life, Jesus Christ has broken. Jesus Christ had already defeated all the works of the enemies in this world. Praise the Lord. That means Jesus Christ has given you the authority and power. Now Jesus Christ is saying, go and preach the gospel. I will be with you. अगर आपको परमेश्वर बोलते हैं कि जाओ, जाकर प्रचार करो, इस जगत में प्रचार करो, तो आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर आपके साथ है। वो पहले ही आपके आगे आगे चल रहा है और आपके रास्तों को तैयार कर रहा है। इसलिए आपको जाना है, परमेश्वर की बात को मानना है और उसके कामों को करना है, क्योंकि उसने हर एक दुश्मन की चाल को, हर एक शैतान की चाल को खत्म कर दिया है। If you are thinking any of the situations are coming against your life, I already said in this Bible, book of Isaiah chapter 45 verse 2 says, I will go before you and make the crooked places straight. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. What all the things are coming against your life, I will go and break it. You can stand with a successful person. You can walk in a victory. You can walk from victory to victory, from glory to glory, because I can do everything what all the things are coming against your life. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात आपके अगेंस्ट, आपके विरुद्ध आता है, तो आप इस प्रॉमिस को, परमेश्वर के वायदे को याद रखें, जो यशाया की पुस्तक 45 उसकी दूसरी आयत में लिखा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे विक्ट्री, तुझे जीत देने के लिए तैयार हूँ, और मैं तेरे साथ हूँ। Today I'm going to close another 2 or 3 minutes time. The people, are you ready to do something for God today? Are you ready to stand for God's work today? The pastors, the ministers, the born again people, those who are doing the ministry work, why do you stop that ministry work? Why don't you restart your ministry work today onwards? In the year of 2021, our God, would this a promise of the Lord? I will go before you. I will break all the crooked places, all the iron bars, all the situations which you are coming in your life. I will go and break it. Are you ready to come out right now? आज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो लोगों के परमेश्वर का काम करते हैं, जो लोग वो परमेश्वर के कामों को लगातार करें, और जिन दासों ने, जिन लोगों ने परमेश्वर के काम को स्टॉप कर दिए हैं, वो अपने काम को कंटिन्यू करें, लगातार करें, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और तेरे सर ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। If you are ready, praise the Lord, I want to pray for you right now. The people are doing any of the ministry work today. The people are doing any of the ministry work. If you are thinking, or I am the wilderness, I have the right situation, I cannot go forward, this is the time to receive the strength and power from the Lord. I want to pray for you.
मैं आज क्या आप तैयार हैं प्रार्थना को रिसीव करने के लिए? मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अपनी सेवकाई को नहीं करूँगा या मैं अपनी सेवकाई को खत्म कर चुका हूँ, जो उनकी ज़िंदगी में हालात बुरे हो चुके हैं, किसी परिस्थितियों के कारण, किसी विरोधता के कारण, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ। अभी टाइम है आपको स्ट्रॉन्ग होने का, आप बलवान बने, बलवंत बने इस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद। I'm going to pray for you. Please raise your hand. When the time of prayer, healing will happen. I want to say, okay, healing will happen. Deliverance will happen. Healing is the nature of the Lord. Lots of healing will happen. Deliverance will happen. Especially today, I'm going to pray for the people, those who are the dried situation. You are going to get an extraordinary power and anointing from the God, from the Holy Spirit right now. हालेलुया। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूँ, अपने हाथों को उठाएं, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा जिनके जीवन में सूखापन आ चुका है, जो अपनी जिंदगी में ड्राइनेस को फील कर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोगों की सेवकाई को कर रहे हैं, इस प्रार्थना को रिसीव करें और उठे खड़े हुए परमेश्वर के कामों को करें। Just want to pray. Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, in the name of Jesus Christ, यीशु मसीह के नाम से I pray for each one of them, Father, मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, especially the people are watching online. उनके लिए स्पेशली प्रार्थना करता हूँ जो ऑनलाइन देख रहे हैं। The people are suffering. People are walking in the wilderness situations. जो लोग पिता परमेश्वर जंगली जीवन जी रहे हैं, किसी भी बुरे हालातों से गुजर रहे हैं, Heavenly Father, I pray for these people, Father. मैं स्वर्गीय पिता इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। Father, thank you for your touching and giving the mighty presence of the Holy Spirit wherever they are. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी इस सुंदर अद्भुत टचिंग के लिए जो आपने इन लोगों को छुआ है। Thank you for your giving the anointing and power from the Holy Spirit right now in their heart right now, Father. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर इसी समय जो आपने इनको हृदयों को छुआ है, अपने अनॉइंटिंग के साथ, अपने मसा के साथ छुआ है पिता। Father, Heavenly Father, I bless their ministry work. I bless all the people, those who are born again, Father. I bless them, Father, in Jesus' name. मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इनको आशीषित करता हूँ, जो लोग तेरी सेवकाइयों को करते हैं, जो दोबारा जन्म ले चुके हैं आपके बीच में, मैं उनके लिए प्रार्थना को करता हूँ। The people are those who are waiting to get the touch and any of the miracle from the Lord, Father. After that, if they are thinking, oh, then only I'll come back to the Lord. Thank you, Father. Thank you for your stretching out your hand towards their body right now. Let their body receive the healing in the name of Jesus Christ. मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि जब आप मुझे टच करेंगे, जब आप मुझे छुएंगे, मेरी जिंदगी में चंगाई को देंगे, तभी मैं परमेश्वर के पास वापस आऊंगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपके मसा के लिए, आपके टचिंग के लिए, जो आपने इनको छुआ है पिता, उन्हें देख के ये तुझ में वापिस आने पाए। In the name of Jesus Christ, I cast out the spirit of sickness from their heart and from their body right now. In Jesus' name, I release the healthy body right now. In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से मैं बीमारियों वाला आत्मा इनके शरीर से निकालता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इनके शरीर से वो हर प्रकार की बीमारी निकल जाए और इनका शरीर हेल्थी हो जाए, अच्छे हो जाए यीशु के नाम से। Once again more, I pray for each one of them. I bless each one. मैं एक बार फिर इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं यीशु के नाम से इनको आशीषित करता हूँ। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Somebody want to shout and say amen. आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Today, comparing yesterday, today I got instruction to talk accordingly. Praise the Lord. Hallelujah. So it was war is walking the difficult situation. Okay. You are going to get the mighty touch from the Holy Spirit, like I showed the apostles. Okay. Chapter 1 and 2. And you could receive the mighty presence of the Holy Spirit. So when you are putting the step forward to do something for God, our God will establish your territory. Praise the Lord. Hallelujah. May God bless you in the name of Jesus. Thank you very much. Today, 4:30 p.m. to 5 p.m., I am preaching in the UK and Europe TV. The people are in UK and Europe. You can watch from your TV in the Sky Channel 589 platform in Europe in Astra Satellite, 4:30 p.m. to 5 p.m. And also it is available in the Facebook Live the same time. All the world can join with us in the Facebook. Praise the Lord. And 6 o'clock, there is a non-stop gospel revival.
you can join with us. This every day is happening. And tomorrow there is a morning session. Thank you very much. Okay, God bless you. Thank you, Sister Deepa. God bless you. Thank you, everybody. Bye.